Greetings to all. Dear students, moving further in the topic of formation of a company, now we are at second step of formation of company. The first step, promotion, has been discussed in my previous presentation. Let us discuss second step in formation of a company, that is incorporation or registration of the company. As a company comes into existence when a number of persons come together to exploit some business opportunities, and these persons are called promoters of the company. Under Section 3 of Companies Act 2013, 7 or more persons in case of a public company, 2 or more persons in case of private company, or 1 person in case of 1 person company may form an incorporated company for a lawful purpose by subscribing their names in memorandum of association of the company. Subscribing the names to the memorandum of association means all the members, they put signatures on the memorandum of association और साथ में ही they fulfill the other requirements in respect of registration. So the purpose for which the company is going to be incorporated must be lawful. जिस पर्पस के लिए कंपनी स्टार्ट की जा रही है वह पर्पस लॉफुल पर्पस होना चाहिए. तो जो लोग इकट्ठे हुए हैं कंपनी को स्टार्ट करने के लिए उनको प्रमोटर्स कहा जाता है. कम से कम 7 लोग स्टार्ट कर सकते हैं पब्लिक कंपनी, 2 लोग स्टार्ट कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी और केवल 1 पर्सन स्टार्ट कर सकता है 1 पर्सन कंपनी. Now, what are the steps before proceeding with the procedure of filing documents? Before filing documents with registrar of companies for formation of the company and for incorporation of the company, there are 3 steps. First is director identification number has to be obtained. The director and digital signatures of promoters have also to be obtained. Both DIN and digital signatures of promoters will be registered with Ministry of Corporate Affairs and will be registered at Ministry of Corporate Affairs portal. After registration and verification of DIN and digital signatures of promoters, then the next steps of incorporation of the company will be followed. It means सबसे पहले कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है और प्रमोटर्स को अपने डिजिटल सिग्नेचर्स रजिस्टर करवाने पड़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल के ऊपर. उसके बाद बाकी के जो स्टेप्स हैं इन फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी वो फॉलो होंगे. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम. Section 4 के accordingly the company cannot be registered by a name which in the opinion of central government is undesirable. कंपनी कभी भी ऐसे नाम से रजिस्टर नहीं हो सकती जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली अनडिज़ायरेबल है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करती. सो ये ज़रूरी है कि प्रमोटर्स शुड फर्स्ट चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम and the availability of the name will be checked by making an application to the registrar of companies. तो प्रमोटर्स कंपनी का नाम फाइनल करने के लिए कुछ प्रायोरिटीज़ मेंशन करेंगे नेम के रिगार्डिंग और उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को सबमिट करवाएंगे. उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ विल फाइनलाइज द नेम ऑफ द कंपनी. बट रजिस्ट्रार के पास प्रायोरिटीज़ भेजने से पहले promoters will check the availability of the name at the site of Ministry of Corporate Affairs and उनको ये भी देखना है the name should not be identical to the name of an already existing company. The name should not be prohibited by Emblems and Names Act. Emblems and Names Act के अकॉर्डिंगली वो नाम मना ना हो.
जो कि कंपनी का प्रपोज्ड नाम प्रपोज कर रहे हैं प्रमोटर्स। उसके बाद प्रमोटर्स एक नाम नहीं देंगे बल्कि वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कुछ नाम अप्लाई करके भेजेंगे और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उसमें से कंपनी का नाम फाइनल करेगी। द प्रमोटर्स आर रिक्वायर्ड to select at least 6 alternative names in order of preference for the proposed company। कम से कम 6 नाम वो priority wise लिख के भेजेंगे and will secure the name availability by making an application to the registrar of companies। उसके बाद वो registrar of companies को वो application फाइल करेंगे। Section 4 of the Companies Act 2013 provides that no company will be registered by a name which is identical to the name of an existing company and which it should not be undesirable in the opinion of central government, और central government भी उस नाम की approval दे। In order to get certificate of registration for a new company, the application in the prescribed form along with prescribed fee will be submitted to registrar of the state in which the registered office of the company is to be situated। जहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस है उसी स्टेट के रजिस्ट्रार को कंपनी अप्लाई करेगी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो जो प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज का फॉर्मेट है उस पर अप्लाई किया जाएगा, उसकी जो प्रेस्क्राइब्ड फ़ी है वो साथ में भेजी जाएगी और रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट को अप्लाई किया जाएगा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। और जब रजिस्ट्रार को अप्लाई किया जाता है तो उस फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी फाइल करने पड़ते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस दोज डॉक्यूमेंट्स विच हैव टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। First is Memorandum of Association. Memorandum of Association is the charter of the company. It is the document upon which the existence of the company is based. इस document में company की existence based है। कंपनी कभी भी मेमोरेंडम के दायरे से बाहर नहीं जा सकती। अगर कंपनी कभी भी कोई ऐसा काम करती है जो मेमोरेंडम के दायरे में नहीं आता, that means that will be ultra virus the company as well। it means वो कंपनी के दायरे से भी बाहर है। so कंपनी जब भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को प्रमोटर्स अप्लाई करते हैं फॉर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, साथ में वो मेमोरेंडम जमा करवाएंगे। सेकेंड डॉक्यूमेंट विच विल बी फाइल्ड इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर mentioned। Then articles should also be signed by all the members who have put their signatures on memorandum। Third important document is declaration। एक डिक्लेरेशन होगी एडवोकेट की तरफ से, चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरफ से, कॉस्ट अकाउंटेंट की तरफ से या कंपनी सेक्रेटरी की तरफ से that all the requirements of the act and the rules in respect of registration have been complied with। कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कंपनी के द्वारा वो सारी पूरी की गई हैं। उसके बाद एक एफिडेविट भी साथ में अटैच होगा। एफिडेविट फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम एंड फ्रॉम पर्सनस नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कि किसी भी तरह से जो कंपनी है उसके जो प्रमोटर्स हैं, जो लोग कंपनी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, वो किसी भी तरह से कोई फ्रॉड, कोई भी मिसफेसेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए। इसके साथ ही द एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। जब तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं होता तो कंपनी का कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कौन सा होगा, दैट विल ऑल्सो बी अटैच्ड अलॉन्ग विद पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। जो भी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेमोरेंडम के ऊपर साइन किया है, उनकी पूरी डिटेल्स, उनके नेम, सरनेम, फैमिली डिटेल्स, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, all the particulars of subscribers will be mentioned in that document। देन पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स, कंपनी के जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनकी भी सारी डिटेल्स उसमें अटैच की जाएगी। पर्टिकुलर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स,
जो फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं उनके क्या क्या इंटरेस्ट हैं कंपनी में, या कोई और फर्म्स में उनके क्या इंटरेस्ट हैं, दैट विल ऑल्सो बी अटैच्ड. पावर ऑफ अटॉर्नी with a view to fulfill the formalities that are required for incorporation of the company. Promoter can also execute a power of attorney in favor of any one of them or in favor of an advocate or a professional. Means एक पर्सन के नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी होगी जिसको सारी पावर्स वेस्टेड होंगी कंपनी की जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती. कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स विल ऑल्सो बी अटैच्ड कि उनकी अपॉइंटमेंट हो गई है और वो कंपनी के डायरेक्टर्स की फॉर्म में वर्क करने के लिए रेडी हैं. देन along with that particulars of directors along with director identification number, सारे डायरेक्टर्स की डिटेल्स और उनके आइडेंटिफिकेशन नंबर्स विल ऑल्सो बी मैंशनड. फाइलिंग ऑफ अग्रीमेंट, the agreement if any with the company which the company proposes to enter into any individual for appointment as managing director, whole time director, manager, that will also be filed. अगर कंपनी ने किसी भी पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है टू एक्ट एज मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर ऑफ द कंपनी, that will also be attached along with the application of certificate of incorporation. The notice of registered office must be made. Registered office का address that I already told you, and a statutory declaration of compliance. एक declaration फाइल की जाएगी in particular form, that is form INC8. ये कंपनीज की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट है वहाँ पे कंपनी से रिलेटेड जो फॉर्म्स होते हैं उनके फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं. तो एक डिक्लेरेशन दी जाएगी INC8 फॉर्म पे. दिस इज नोन एज स्टैच्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस. Promoters will file a statutory declaration stating that all the requirements of Companies Act related to registration of the company have been complied with, जिसमें promoters की तरफ से एक डिक्लेरेशन होगी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी कंपनीज एक्ट की कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई हैं. After that, when all the documents will be filed, then there will be registration of the company by registrar of companies. If registrar of companies is satisfied that all the requirements of registration have been complied with, then registrar will register the name of the company, and the name of the company will be finalized by the registrar from the proposed names which have been given by the promoters of the company. After that, a certificate of incorporation will be issued to the company. On registration, the registrar will issue a certificate of incorporation in form INC11. उसका जो फॉर्मेट है that is INC11, whereby the registrar certifies that the company is incorporated, and in case it is a limited company, then the company is limited. On and from the date which is mentioned in the certificate of incorporation issued to the company, the registrar will allot the company a CIN. CIN stands for कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर. हर कंपनी के पास एक कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से मिलता है. एंड फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी विल बी एबल to act as a separate person in the eyes of law, and all the characteristics of the company under Companies Act 2013 will be applicable to the company. Now the company can sue and be sued by any person. Now the company will be a separate person in eyes of law. Company will have right to hold the property, to sell the property, to buy the property. So all the features of the Companies Act now will be applicable upon the company. Next step in formation of the company is capital subscription. When the company has been registered and has received
certificate of incorporation for registrar of companies. Now it is ready for flotation of capital. Flotation of capital means अब कंपनी कैपिटल फ्लोट कर सकती है, कैपिटल रेज कर सकती है जो कंपनी को का बिजनेस चलाने के लिए ज़रूरी है. दैट मीन्स नाउ द कंपनी कैन इनवाइट द जनरल पब्लिक टू अप्लाई फॉर शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी. No doubt, private company is prohibited from inviting public to subscribe for shares and debentures, but the public company can invite the general public to apply for shares or debentures of the company. And the last step in formation of company is commencement of business. As per section 11 of Companies Act 2013, now all newly incorporated public companies and private companies having share capital will be required to obtain a certificate of commencement of business from Registrar of Companies. Companies Amendment Ordinance 2019 requires that this certificate of commencement is mandatory now for both private and public companies. As I discussed in my previous डिस्कशन इन द प्रीवियस प्रेजेंटेशन कि 2015 में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को अबॉलिश कर दिया गया था, बट अगेन 2019 में इट इज़ कंपल्सरी फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज हैविंग शेयर कैपिटल टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस within 6 months of incorporation, without which it cannot commence its business activity or borrowing powers. क्योंकि अब इसके बिना कंपनी अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ और बोरोइंग पावर्स को यूज़ नहीं कर सकती. दैट मीन्स इस पॉइंट में देयर हैव बीन लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स. पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पब्लिक कंपनीज़ के लिए ज़रूरी होता था, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होता था 2013 से पहले. फिर 2013 में कंपलसरी हो गया कंपनीज़ के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना, बट 2015 में इसको ऑल टुगेदर कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया था. But again in 2019, it is compulsory for both public and private companies to obtain certificate of commencement of business in order to start their business. So now there are 4 steps in formation of the companies, whether it is public company or private companies. The first step is promotion, second step is incorporation, third step is capital subscription, and fourth step is commencement of business. With this, the topic of formation of companies is complete. There is another small topic, that is pre-incorporation contract, on which you can get short note in your paper. प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी के बिहाफ पे किए जाते हैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन से पहले. जो प्रमोटर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स. सो विद दिस टॉपिक इज कंप्लीट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.